गणेशाय नमः। श्रीशद्महापुराणे चतुर्थकोटियुगसंहितायाम् अथैकचत्वारिंशोऽध्यायः। ऋषियुचु मुक्तिर्नाम त्वया प्रोक्ता तस्यां किमु भवेद्यः अवस्था कीदृशी तत्र भवेदिति वदस्व न। श्रुत्वाच मुक्तिश्रुति विद्या प्रोक्ता श्रूयतां कथयामि वा। संसारक्लेशसंहस्त्री परमानन्ददायिनी सारूपया चैव सालोक्या सान्निध्या च तथा परा। सायुज्या च चतुर्थी सा वृत्तिनानेन या भवेत्। मुक्तिर्दाता मुनिश्रेष्ठा केवलं शिव उच्यते। ब्रह्माद्या न हि ते ज्ञेया केवलं च त्रिवर्गदा। ब्रह्माद्या स्त्रीगुणाधीशा शिवस्त्रीगुणता परा। निर्विकारी परब्रह्मा तुर्यप्रकृतिता परा। ज्ञानरूपो व्ययः साक्षी ज्ञानगम्यो द्वयः स्वयं। केवलमुक्तितः सोऽत्र त्रिवर्गस्य प्रदोषिः। केवलाख्या पञ्चमी च दुर्लभा स्वर्था नृणां। तल्लक्षणं प्रवक्ष्यामि श्रूयतां ऋषिसत्तमा। उत्पद्यते यथा सर्व येन तत् पाल्यते जगत्। यस्मिक्षं लीयते तद्वि येन सर्वमिदं ततं। तदेव शिवरूपं हि पठत्यते च मुनीश्वरा। सकलं निष्फलं चेति द्विधं वेद वनाति न। विष्णुना तच्च न ज्ञातं ब्राह्मणान् च तत्तथा। कुमाराध्यक्ष न ज्ञातं नारदेन वै। शुकेन व्यासपुत्रेण व्यासेन च मुनीश्वरे। तत्पूर्वोक्षाखिलैर्देवैर्देशास्त्रैस्तथा न हि सत्यं ज्ञानमनन्तं च सच्चिदानन्दसंयुतं। निर्गुणो निरुपाधिक्षाव्ययः शुद्धो निरञ्जनो न रक्तो नैव पीतश्च न श्वेतो नील एव च। न ह्रस्व न च दीर्घश्च न स्थूलः सूक्ष्म एव च। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तदेव परं प्रोक्तं परोहोप शिवसंज्ञकम्। आकाशं व्यापकं यत्तथैव्यापकं द्विविधम्। मायातीतं परात्मानं द्वन्द्वातीतविमत्सरं। तत्प्रात्यक्ष भवेत् तत्र शिवज्ञानोदयाद्ध्रुवम्। भजनादाशिव यस्यैव सूक्ष्मतया सतां द्विजा। ज्ञानं तु दुष्करं लोके भजनं सुकरं मतं। तस्मात् शिवं च भजत मोक्षतर्थमपि सत्तमा। शिवो हि भजनादीनो ज्ञानात्मा मोक्षदः परा। भक्त एव बहवस्विता मुक्तिं प्राप्तु परां मुदा। ज्ञानमाता शम्भुभक्तिर्मुक्तिमुक्तिप्रदा सदा। सुलभाय प्रसादादि सत्प्रेमाङ्कुरलक्षणा। सा भक्तिर्विधा ज्ञेया सगुणा निर्गुणा द्विजा। वैधि स्वाभाविकी या वरासा सा स्मृता परा। नैष्ठिके नैष्ठिकी भेदात् द्विविधैव हि कीर्तिता। षड्विधा नैष्ठिकी ज्ञेया द्वितीयैकविधा स्मृता। विहिता भेदा तामनेकां विदुर्बुधा। तयो बहुर्विध्यत्वाच्च विस्तारो न हि वर्ण्यते। तेन वाङ्गे उभे ज्ञेये श्रवणादिकभेदता। सुदुष्करे तत्प्रसादं विना च सुकरे तदा। भक्तिज्ञानेन भिन्नैः शम्भुना वर्ण्यते द्विजा। तस्माद्वेदो न कर्तव्यस्तत्कर्तुं सर्वदा सुखं। विज्ञानं न भवत्येव द्विजा भक्तिविरोधिना। शम्भुभक्तिकरस्यैव भवेत् ज्ञानोदयो द्रुतं। तस्माद्भक्तिर्महेशस्य साधनीया मुनीश्वरा।
तयैव निखिलं सिद्धं भविष्यति न संशया इति पृष्टं भवेद्विद्ये देव कथितं मया यच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशया इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थकोटिरुद्रसंहितायां मुक्तिनिरूपण नामेकचत्वारिंशोऽध्याय अथ द्विचत्वारिंशोऽध्याय ऋषियुचु शिवा को वा हरि को वा रुद्र को वा विधीक्षक अतेषु निर्गुणा को वा होतं नशि छन्दी संशयं सुतवाच यजादो हि समुत्पन्नं निर्गुणात् परमात्मना तदेव शिवसंज्ञं हि वेदान्तिनो विदु तस्मात् प्रकृतिरुत्पन्ना पुरुषेण समन्विता ताभ्यां तपा कृतं तत्र मूलस्थे च जले सुधी पञ्चक्रोशीति विख्याता काशी सर्वातिवल्लभा व्याप्तं च सकलं होतत् जलं वीक्षितो गतं सम्भाव्य मायया युक्तस्त्र सुप्तो हरि स वै नारायणेति विख्यातो मायानारायणी मता तनाभिक्मकमले यो वै जातः स च पितामहः तेनैव तपसा दृष्टः स वै विष्णुरुदाहृत उभ्यो वार्धश्मने यद्रूपं दर्शितं बुधा महादेवेति विख्यातं निर्गुणेन शिवेन हि तेन प्रोक्तमहं शम्भुर्भविष्यामि कभालता रुद्रो नाम स विख्यातो लोकानुग्रहकारका ध्यानार्थ चैव सर्वेषां रूपरूपवान्भूतः स एव च शिवा साक्षात् वात्सल्यकारका शिवे त्रिगुण सम्यक् रुद्रे तु गुणधामनि वस्तुतो न हि भेदोऽस्ति सर्वनेतदूषणे यथा समानरूपः कर्माणो संभक्तगतिप्रदो समानाखिलसंसेव्यो नानालीलाविहारिणो सर्वथा शिवरूपो हि रुद्रो रौद्रपराक्रमा उत्पन्नो भक्तकार्यार्थो हरिब्रह्मा सहायकृत अन्य च ये समुत्पन्ना यथानुक्रमतो लयं यान्ति नैव तथा रुद्र शिवे रुद्रो विलीयते ते वै रुद्रं मिलित्वा तु प्रयान्ति प्रकृता इमे इमानुद्रो मिलित्वा तु न याति श्रुतिशासनं सर्वे रुद्रं भज्यन् येव रुद्रकञ्चिद्गजेन हि स्वात्मना भगवत् वात्सल्याद्वज्यतेव कदाचन अन्यं भजन्ति ये नित्यं तस्मिंस्ते लीनतां गता तेनैव रुद्रं ते प्राप्ता कालेन महता बुधा रुद्रभक्तास्तु ये केचित् तत्क्षणं शिवतां गता अन्यापेक्षात् न वे तेषां श्रुतिरेषा सनातनी अज्ञानं विविधं होति दिज्ञानं विविधं न हि तत्प्रकारमहं वक्षे शृणुतार ततो द्विजा ब्रह्मादित्यं प्रर्यन्त यक्ति किञ्चित् दृश्यत्येद्वः तत्सर्व शिव एवास्ति मिथ्या नानात्वकल्पना सृष्टिपूर्वं शिव प्रोक्ता सृष्टिमध्ये शिवस्तथा सृष्टिरन्ते शिवा प्रोक्ता सर्वशून्य सदाशिवा तस्मात् चतुर्गुणं प्रोक्ता शिव एव मुनीश्वरा स एव सगुणो ज्ञेय शक्तिमत्वाद्विधापि स येनैव विष्णवे दत्ता सर्वे वेदा सनातना वर्णमात्राहानिकाक्ष ध्यानं स्वस्य च पूजनम् ईर्ष्यानं सर्वविद्याना श्रुतिरेषा सनातनी वेदकर्ता वेदपतिस्तस्मात् शम्भुरुदाहृत स एव शङ्करा साक्षात् सर्वानानुग्रहकारका कर्ताभर्ता च हर्ता च साक्षी निर्गुण एव सा अन्येषां कालमानं च कालस्य कलना न हि महाकाला स्वयं साक्षात् महाकाली समाक्षिता तथा च ब्रह्मणा रुद्रं तथा कालीं प्रचक्ष्यते सर्वं ताभ्यां तत्ता प्राप्त
मिच्छया सत्यलीलया न तस्योत्पादका कक्षिदर्ता हर्ता न तस्य हि स्वयं सर्वस्य हेतेस्तुस्ते कार्यभूताच्युतादय स्वयं च कारणं कार्यं स्वस्य नैव कदाचन विकोपयनेकतां यातो अपयेनेकोपयेत्कतां व्रजेत् एकं बीजं बहिर्भूत्वा पुनर्बीजं च जायते बहुत्वे च स्वयं सर्वं शिवरूपी महेश्वरा एतत् परं शिवज्ञानं तत्त्वतस्तदुदाह्यतं जानामि ज्ञानवानेन नान्यकक्षिद्विषीश्वरा मुमूर्षु ज्ञानं सलक्षणं ब्रूहि यज्ञात्वा शिवतां व्रजेत् कथं शिवाक्ष तत्सर्वं सर्ववा शिव एव च व्यासुवाच एतदाकरणं वचनं सूतपौराणिकोत्तम समृत्वा शिवपदाम्भोजं मुनिस्तानब्रवीद्वच इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थकोटिरुद्रसहितायां सगुण निर्गुणदेववर्णनामदेशविंशोऽध्यायः। अथ त्रिचत्वारिंशोऽध्याये सूतुवाच श्रूयतामृश्य सर्वे शिवज्ञानं यथा श्रुतं कथयामि महागुह् परमुक्तिस्वरूपकं कनारदकुमारनां व्यासस्य कपिलस्य च तेषां च समाजे तैनिष्यते समुदाहृतम् इति ज्ञानं सदा ज्ञेयं सर्वयं शिवमयं जगत् शिवः सर्वमयो ज्ञेय सर्वज्ञेन विपश्यता आब्रह्मात्रिं पर्यन्तं यति कञ्चित् दृश्यते जगत् तत्सर्वं शिव एवास्ति सदेव शिवः उच्यते यदेच्छा तस्य जायेत तदा च क्रियते द्विदं सर्वं स एव जानाति तं न जानाति कश्चन रक्षयित्वा स्वयं तच्च प्रविश्य दूरतस्थिता न तत्र न प्रविष्टोऽसौ निर्लिप्ताश्रित स्वरूपवान् यथा च ज्योतिषश्चैव जलादौ प्रतिबिम्बता वस्तुतो न प्रवेशो वै तथैव च शिवः स्वयं वस्तुतस्तु स्वयं सर्वक्रमो हि भासते शुभा अज्ञानं च मतेर्भर्तो नासत्यं च द्वयं पुनः दर्शनेषु च सर्वेषु मतिभेद प्रदर्श्यते परं वेदान्तिनो नित्यं द्वैतं प्रति चक्षते स्वस्याप्यसंशयस्य जीवोऽशो महाविद्या मोहितो वशा अन्योऽहमिति जानाति तया मुक्तो भवेत् शिवः सर्वव्यापक शिवः साक्षात् व्यापकः सर्वजन्तुषु चेतनाचेतनेषोऽपि सर्वत्र शङ्करः स्वयम् उपायं यः करोत्यस्य दर्शनार्थ विचक्षणा वेदान्तमार्गमाश्रित्य तद्दर्शनफलं लभेत् यथा गिन्वार्यपक्षेव काष्ठे काष्ठे च तिष्ठति यो वै मन्थति तत्काष्ठं स वै पश्यत् संशयं भक्त्यादिसाधनानिह यः करोति विचक्षणः स वै पश्यत् वशं हि तं शिवं नात्र संशया शिवा शिवा शिवाक्षैव नान्यदस्तीति किञ्चन भ्रान्तया नानास्वरूपो हि भासते शङ्करस्तदा यथा समुद्रो मृच्चैव सुरवनमथवा पुनः उपाधितो हि नानात्वं लभते शङ्करस्तथा कार्यकारणयो भेदो वस्तुतो न प्रवर्तते केवलं भ्रान्तिभुजैव तद्भावे स नश्यति तदा बीजातप्रोहक्ष नानात्वं हि प्रकाश्यते येत् अन्ते च बीजमेव स्यात्तत्प्रोहक्ष नश्यति ज्ञानी च बीजमेव स्यात् प्रोरोह विकृतिर्मता तनिवृतो पुनर्ज्ञानी नात्र कार्याविचारणा सर्वं शिवा शिवा सर्वो नास्ति भेदक्ष कक्षन कथं च विविधं पश्यत् ये कतवं
च कथं पुनः यथैकं चैव सूर्याखं ज्योतिर्नानाविधं जने जलादौ च विशेषेण दृश्यते तथैव च सर्वत्र व्यापकक्षैव स्पशत्वं न विभद्यते तथैव व्यापको देवो बध्यते न क्वचित् स वै साहङ्कारस्तथा जीवस्तन् मुक्तशङ्कर स्वयं जीवस्तु च परं भोगी निर्लिप्तशङ्करो महान् यथैकं च सुवर्णादिमिलितं रजतादिना अल्पमूल्यं प्रजायेत तथा जीवोपयहं युता यथैव हि सुवर्णादिक्षरादेशोदितं शुभं पूर्ववन्मूल्यतां याति तथा जीवोऽपि संस्कृते प्रथम सद्गुरुं प्राप्य भक्तिभावसमन्विता शिवबुद्ध्या करोत्युच्चे पूजनं स्मरणादिकं तद्बुद्ध्या देहतो याति सर्वपापादिकोमला तदा ज्ञानं च नश्येत ज्ञानवान् जायते यदा तदाहङ्कारनिर्मुक्तो जीवो निर्मलबुद्धिमान् शङ्करस्य प्रसादेन याति शङ्करता पुनः यथादर्शस्वरूपे च स्वयं रूपं प्रदर्शते सदा सर्वत्रगं शम्भुः पश्यतीति सुनिश्चितं जीवन्मुक्त स एवासो देहशीनं शिवे मले प्रराभत् वशगो देहस्तभिनो ज्ञानवान् मता शुभं लब्ध्वा न हृष्येत कुप्लयेत् लब्धा शुभं न हि द्वन्द्वेषु समता यस्य ज्ञानवानुच्यते हि स आत्मयोगेन तत्त्वानां मत्वा च विवेकता यथा शरीरतो यायात् शरीरं मुक्तिमिच्छता सदाशिवो विलीयेत मुक्तविरहम्यवेव च ज्ञानमूलं तथाध्यात्ममयं तस्य भक्तिशिवस्य च भक्तेक्ष प्रेम सम्प्रोक्तं प्रमेनक्ष श्रवणं तथा श्रवणा चापि सत्सङ्गं सत्सङ्गा च गुरुर्बुधा सम्पन्ने च तथा ज्ञाने मुक्तभक्तिनिक्षितम् इति चेत् ज्ञानवान्यो वै शम्भुमेव सदा भजेत् अनन्या च भक्तया वै युता शम्भु भजेत् पुनः अन्ते च मुक्तिमायाति नात्र कार्या विचारणा अतोऽधिको न देवोऽस्ति मुक्तिप्राप्ते च शङ्करात् शरणं प्राप्य यच्चैव संसारादिनिवर्तते इति मे विविधं वाक्यं ऋषिणा च समागते निश्चितकथितं विप्राधियाधार्य प्रयत्नता प्रथमा विष्णवे दत्तं शम्भुना लिङ्गसम्मुखे विष्णुना ब्राह्मणे दत्तं ब्राह्मणा सनकादिषु नारदाय तथा प्रोक्तं तज्ज्ञानं सनकादिभिः व्यासाय नारदेनोक्तं तेन ब्रह्मा कृपालुना मया चैव भवद्दक्ष भवद्लोकहेतवे स्थापनीयं प्रयत्नेन शिवप्राप्तिकरम् च तत् इति वक्ष समाख्यातं यत्पृष्ठोऽहमुनीश्वरा गोपनीयं प्रयत्नेन किमन्यच्छ्रोतुमिच्छत व्यासुवाच एतच्छ्रुत्वा तु ऋष्य आनन्दं परं गता ऋष्यगद्या वाचा नत्वा ते तुष्टुर्मुहुः ऋषिषु व्यासशिष्य नमस्तेस्तु धन्यसत्त्वं शैवसत्त्वं श्रावितं न परं वस्तु शैवज्ञानमुत्तमम् अस्माकं चेतसो भ्रान्तिर्गता हि कृपया तव सन्तुष्टा शिवसज्ञानं प्राप्य तत्त्वतो विमुक्तिदम् श्रुत्वाच नास्तिकाय न वक्तव्यं शादय शिखाय च भक्ताय महेशस्य न चाक्षुषुषवे द्विजा इतिहास पुराणानि वेदाशास्त्राणि चास्कृता विचार्य कृत्य तत्सारं महाव्यासेन भाषितम् एतच्छ्रुत्वा होत्वारं भवेत् पापं हि भस्मसात् अभक्तो भक्तिमाप्नोति भक्तस्य भक्तिवर्धनं पुनः श्रुते च सद्भक्तिर्मुक्तिस्या च श्रुते पुनः तस्मात् पुनः पुनः श्राव्यं भुक्तिमुक्तिफलेत्सुभिः आवृत्य पञ्चकार्या समुद्दिश्यं फलं परं तत्प्राप्नोति न सन्देहो व्यासस्य वचनं कृतं
न दुर्लभं हि तस्यैव येनेदं श्रुतमुत्तमं पञ्चकृत्वस्तदा विद्या लभ्यते शिवदर्शनं पुरात्नाक्ष राजानो विप्रावेशाक्षसत्तमा इदं श्रुत्वा पञ्चकृत्वो धिया सिद्धिं परां गता शोषध्यापि यक्षेदं मानवो भक्तितत्परा विज्ञानं शिवसंयज्ञं वै भुक्तिमुक्तिलभे च सा व्यासुवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा परमानन्दमागता समानर्चुक्षते सूतं नानवस्तुभिरादरात् नमस्कारे सतव्यक्ष क्षैव स्वस्तिवाचं पूर्वकम् आशीर्भिर्वर्धयामासु सन्तुष्टा संशया परस्परं च सन्तुष्टा सूतस्ते च सुबुधे शम्भुदेवं परं नत्वा नमन्ति सम्भजन्ति च एतचिव सुविज्ञानं शिवस्याति प्रियं महत् भुक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यं शिवभक्तिविवर्धनम् इयं हि संहिता पुण्या कोटिरुद्र्याहया परा चतुर्थीषु पुराणस्य कथिता मे मुदा वः एतां शृणुयादक्त्या श्रावयेदा समाहिता स भुक्त्वेवाखिलान् भोगानन्ते परगतिं लभेत् इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्विंशतिसहस्र वैयासिक्यां संहितायां तदन्तर्गतायां चतुर्थ्या कोटिरुद्रसंहितायां ज्ञाननिरूपं नाम त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः समाप्य चतुर्थी कोटिरुद्रसंहितायाम्।